लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा ना कि जैसे वो कल जो मैंने लेक्चर शेयर किया था जिसमें कुछ इंटीरियर पॉइंट की प्रॉपर्टी और ये प्रूव किया था कि एवरी ओपन बॉल और ओपन स्फीयर, ठीक है, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करें, इज ऑलवेज एन ओपन सेट. एंड सेकंड वन, दैट अ सेट इज सेड टू बी ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स. ठीक है, तो क्योंकि अगर बॉल्स के बारे में मालूम है किसी भी सेट पे, अगर मेट्रिक स्पेस में अगर आपको बॉल्स मालूम है तो बॉल्स के यूनियन से मैं ओपन सेट जनरेट कर सकता हूँ. ओपन बॉल्स के यूनियन से मैं ओपन सेट जनरेट कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसलिए मैंने उसका प्रूफ डिस्कस करा दिया. प्रूफ तो बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन हर एक नहीं करा सकता, कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा. पर हर तरह के कुछ स्टैंडर्ड प्रूफ है, कैसे अप्रोच करेंगे वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ. तो अब आज के लेक्चर में बेसिकली बुक शेयर करके मैं दिखाता हूँ उसमें. तो मैं 2-3 लेक्चर आपको बीच बीच में लेक्चर रिकॉर्ड करके भी देते जाऊंगा. देखो, एक तो ये रिजल्ट है, यहाँ तक तो ये तो मैंने करा दिया था. इन अ मेट्रिक स्पेस एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज अ क्लोज सेट, ये आप उसी तरह खुद से कर लेंगे. ठीक है ना, एवरी क्लोज्ड स्फीयर जस्ट लाइक एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट. Here same result is okay. Let us discuss this, but before this one, ये यहाँ तक करा दिया था मैंने आपको ना, क्लोजर ऑफ अ सेट. तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं. हाँ देखो, यहाँ से मुझे लगता है क्लोज सेट एंड क्लोजर ऑफ अ सेट एक शॉर्ट में रिकॉल कर देता हूँ. हालांकि ये कई बार हम लोगों ने डेफिनेशन देख रखा है, इस एग्जांपल भी मैंने एक क्लास में डिस्कस करा दिया था, लेकिन इस डेफिनेशन को हम यूज करेंगे उसमें प्रूफ. सो लेट ए बी ए सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस X. एनी पॉइंट of a metric space is said to be limit point or accumulation point or cluster point of A if each open sphere centered on X contains at least one point of A other than X. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, और in mathematically we can say that all those X of the space means metric space is limit point of a set A if with center at X whatever ball you draw. In fact, for every r greater than 0 means for all sphere with center at X, its intersection with set A should be non-empty apart from X. See this X, we have two choices for this X. In case of limit point, this X belongs to X. So we are looking for limit point of the set A. A is subset of X, and we are looking that whether this X is limit point of A or not. So we have two choices. We need to check X belonging to A as well as X belonging to its complement. X belonging to A, because X is a member of the metric space. So it can be member of A, it can be outside from A. For example, we have seen that in open interval 0, 1, 1 is also its limit point, but if I take A equal to open interval 0, 1 and X equal to R equal with the usual metric, then we have seen that in that case, apart from 0, 1, I mean apart from all real numbers lying in between 0, 1, 0 and 1 are also its limit point, but they are not member of the set A. So in case of limit point, it can be member of the set, it can be outside from set. So that is what we need to check, both of them. So obviously, see, somewhere you will see if X belongs to A, then either you write here X in this one, or with A minus X, it will not matter, because in some books you will find that they are writing like this way. But it's better to, because we are deleting X from any of the set. I mean, either this open sphere or from set A, because it lies in their intersection. So if I delete X from any one of them, then it is equivalent to saying that SRX intersection A minus X is not equal to phi, or SRX minus X, deleted neighborhood of this ball. I mean, sorry, if you delete this center from this ball,
its intersection with set A should be non-empty. But in that case, when X is not member of a complement, obviously again, since X is not present here, and if X is present here, then again in its intersection is going to be 5. And suppose, or I can say, in other words, I can say that, see, if X belongs to A, then in that case, this definition can be also like this, that SRX, I can also write this intersection A is equal to exactly singleton X. I mean, every ball around X, to discard that a given limit point, a given set, a given point is not a limit point, either show that there exists at least one open sphere with center at X whose intersection with A is empty, or whose intersection with A is exactly singleton X. This argument we will use to discard, not to prove. To prove, we need to check arbitrary. I mean, by taking center at X, whatever sphere we are constructing, its intersection with A apart from X should be non-empty. But to reject either that X is not a limit point, to reject that X is not a limit point, either show this one or show that SRX minus singleton X, I mean, it fails for at least one ball, is equal to empty. So these arguments we will use to show that X is not limit point of A. So whenever X is not limit point of A, we need to show that at least there exists at least one sphere greater than 0. I mean, radius greater than 0 means there exists at least one, such that this intersection is empty. Now using this, let us come to this proof. Or in other words, see, you can see here that by the definition of limit point, we follow that any open sphere centered on a limit point of A must contains infinitely many members of A. That is to say, a point X belongs to X is a limit point of A if every open sphere with center at X, its intersection with set A is an infinite set. So this proof we have already seen that the earlier statement and this one is equivalent. Because how many choices we have for R? We have infinite choice. So whenever we I mean, every ball with center at X, its intersection with set A, it contains infinite member of from the set A. And here is the definition of this isolated point of X. Any point of X is said to be isolated point if there exists at least one open sphere centered at X which contains no point of A other than X itself. Whatever radius you choose, if there exists an open sphere, at least one open sphere centered on X, I mean, which is not limit point, because if X is a limit point of A, then whatever open sphere you are choosing around this X is center at X, its intersection with A apart from X is always going to be non-empty. So if it fails for at least one of the open sphere, then we say that those points are said to be limit points. So you can, in general, you can say that isolated points are just opposite to limit point. For example, say we see that the limit point of 1 by n is 0. Limit point of this set 1 by n in R with respect to usual metric is 0. Its limit point is why? Because whenever around 0, I mean with center at 0, we try to make the open balls which are open intervals in case of usual metric in R. Here the members of the type 1 by n for every n greater than equal to n naught, we have seen that from Archimedean property of real numbers, whatever epsilon you choose, there always lies infinitely many elements of the type 1 by n for n greater than equal to n naught. So apart from this 0, so this intersection is always going to be non-empty. But say, for example, let me take set of these integers. Let me draw this one. Try to first understand it in case of this. Then you can see that all these are all these are isolated point. Why? Say in case of set of integers as a subset of R, and on R we have usual metric. Then what will happen that to claim that 0 is an isolated point, see, I can make a cut in this way. So you can see that intersection of this open ball, see,
open ball with center at 0, such that radius is equal to half, 0 minus half and 0 plus half. Its intersection apart from 0 with the set of integers is going to be empty. This one is clear because there is only one integer in this is 0, and I have already removed 0 from this open ball, and after this taking intersection with set of integers, it is going to be empty. So I can say that this 0 is an isolated point because I have constructed at least one ball of radius half whose intersection with set of integers is going to be empty. That is what. So this one is like, so I can say that 0 is an isolated point. Similarly, 1 is an isolated point. Similarly, minus 1 is an isolated point. Now, using this definition, once again read this. A point x belonging to x is said to be an isolated point of x if there exists an open sphere. It means there exists at least one open sphere centered on x, contains no point of a other than x itself. That is, SRX intersection A is exactly singleton x. So I can also say that SR0 SR0, I mean, for r equal to half, this open interval with center at 0, its intersection with set of integer consists of exactly singleton 0. Since it fulfills this definition, I have constructed at least one open ball. See, these examples are very important because while doing the proof, if you have good understanding of all these proofs, then it is going to help you. Otherwise, it will be confusing. This is the reason why I am explaining before the proof. I am trying to explain all these examples. Similar type of isolated point concept you will study in complex analysis. There you will find that in complex analysis, around every point under usual metric of complex analysis, you will find that we will, in place of open interval, you will take open disk there. So again, any point is said to be isolated if there exists at least one open sphere around that point whose intersection with whatever set given is exactly this center. So all those points are said to be isolated point. But in case of limit point, if we are claiming that x is a limit point, then every sphere with center at x, its intersection with set A apart from x should be always non-empty. So you can see that limit point and isolated points. Now, if a point x belongs to x is not a limit point of A, then it will be an isolated point of A. Not a limit point of A means it is going to fail for at least one open set. Intersection is going to be empty for at least one open set with center at x. And that is what the definition of isolated point. So whenever x is not a limit point, it is going to be an isolated point. Hence, every point of a metric space is either a limit point or an isolated point. So you can see that very good remark is here, that every limit point is either every point of a metric space is either a limit point or isolated point. Let me check whether someone is joining or not. Two people are in waiting room. So let me allow them. Okay. Now, definition 1.9. Let A be a subset of a metric space X. The closure of A, denoted by A closure, or closure of A, is the union of A and the set of all limit points of A. That is, A closure is equal to A union A dash. A dash is basically derived set, collection of all limit points. So closure of A is A union A dash. In other words, if X belongs to a closure, this one is a very important definition. We will use it at several places. In other words, X belongs to a closure if every open sphere with center on X and radius r greater than 0 contains a point of A, that is, X belongs to a closure if and only if sphere, every open sphere, its intersection with set A is non-empty for every r greater. So try to observe the difference. See this difference and what we have seen in limit point. See in case of limit point, if we are claiming that
X is a limit point of any set A, which is subset of X, then SRX minus singleton X, its intersection with, then for every R greater than 0, for every R greater than 0, I mean for every sphere with center at X, its intersection with set A should be non-empty, apart from X. I mean every open sphere must intersect with A apart from X, other than X. Okay. Now you can see that if A is intersecting with every open sphere by after excluding this center, then obviously it is going to intersect with its superset, because this SRX is superset of SRX minus singleton X. So again this intersection with this is non-empty. So I can say that every limit point will be member of this one. Is it clear to everyone? Yes, sir. क्लोजर डेफिनेशन दोबारा बता दीजिए सेकंड वाली. देखो ये डेफिनेशन ना, मैं लिमिट पॉइंट की बात कर रहा हूं. व्हेन वी से दैट x is limit point of a, this recall that definition, that then for every open sphere must intersect with A apart from X. So if set A is intersecting with this one after deleting X, then obviously this set is again going to intersect, I mean intersection will be non-empty with its superset. भाई जब छोटे वाले सेट से इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो उसके सुपर सेट से भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि ये तो इसमें कंटेंट है ना SRX में. यस सर. डिफरेंस आप ऑब्जर्व करो. जैसे मान लो ये है, ये बॉल मेरा बना, इसमें से मैंने इस पॉइंट X को हटा के इसके साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है का, तो अगर इससे कोई बड़ा सेट भी लेके इंटरसेक्शन तब भी तो ये उसके अंदर आएगा. जस्ट ट्राई टू first real line and then we will try to extend it on arbitrary metric spaces. So this I am leaving, this you can do by yourself, take it as home assignment. It is already solved here. Counter example is this one. Result is very important, that closure of a intersection B is only one side equality will hold, and this is the counter example shown here. So you can take it, because in real analysis already we have done this. Now there are some important remark. Just like interior points, see if A is contained into B, then A closure will be also contained into B closure. So let me come to this one, remark 1.16. In a metric space X or X, say XD, metric D, open sphere, this is the notation for open sphere. Open sphere is always contained into closed sphere. If you recall in earlier lectures, in starting of my lecture, I have explained this with the help of example. Okay, so you can do it by yourself. And you can read it, because these remarks are important. In competitions, you will find a question based on these remarks. Now, this one is a very good example. This one is a very important theorem, which will be used at several places. Suppose X is a metric space and A is a subset of X, then X belongs to A closure if and only if rho of X is equal to 0. What this rho stand for? Distance between sets. Yes. This notation I have initially explained that this is used for distance of a point X from a set A. So how that is computed? If you recall, the rho of X is defined like this: distance between two set or distance between a point and a set. We need to collect all the distances between X and Y, where Y belongs to A. We need to compute d of xy, because metric is already given there. So using metric, I can compute distance between every two elements. So whatever elements y we have in A, try to compute the distance from X. So that will be denoted by dxy for y belonging to Y. And after computing this distance, basically this is going to be real number, because D is a map from X cross X to R plus union 0. So D will be always a real number. And on set of reals, we can talk of infimum and supremum. So in distance function, the infimum of this set is defined as distance function. First, you have to compute
the distance between fixed x and every y belonging to the set A, and then after this takes infimum of this set. This is assigned as distance of the point x from set A. Now using this definition, we need to show that x belongs to A closure if and only if rho of x equal to 0. So see, there are two definitions, very important definition. This definition is in terms of metric. Basically, this rho involves metric. If you look up the definition, this rho involves the metric D. With this metric, we are calculating distance, and then after taking infimum, we are getting the distance between x and A. So this definition is based on the metric, and we also know that with the help of metric we can generate open ball. And this earlier definition, so we will use this definition. This one is more general because this definition we will use also in topological spaces. However, here I am not going to discuss that, because in topological spaces we will deal with basically open sets. So this definition is in terms of open set, that x belongs to A closure if and only if every open sphere intersection of every open sphere with A is non-empty. So one definition is this one. This one is because SRX, if you look at the definition of SRX, open ball SRX, then this one is collection of all those x from X such that distance between x, y is strictly less than R. Is strictly all those y from X such that distance between x, y is strictly less. So again, using this metric D, we are generating open set, open sphere, open balls. So remember, these two definitions are very important, and we will use at several places. Either you use this definition that x belongs to A closure if and only if every open ball intersect intersection of every open ball with center at X with A is non-empty, or x belongs to A closure if and only if distance between set A and the point A and the set A is 0. Infimum of the distance from X and set A equal to 0. This is not just distance. This one is collection of all distances, and then we are taking infimum. So it involves infimum. Now tell me, what is infimum of epsilon? Infimum of epsilon greater than 0. बता चुका हूं, बताओ देखिए कितने लोगों को याद है infimum of epsilon क्या होता है? 0 सर। क्यों 0 होगा? क्योंकि सर एनालिसिस में भी आपके लेक्चर में कई बार मैं यूज कर चुका हूं, बताएं। ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्या डिनोट करेगा? 0 टू इंफिनिटी। यस सर, यही तो है सेट। मतलब एप्सिलॉन के पास चॉइसेस क्या होंगे, इसी में तो लाई करेगा एप्सिलॉन। बताओ इस सेट का इनफिमम क्या है? सर 0 अब समझ में आ गया? Whatever epsilon you choose greater than 0, I can write it this one. और इस सेट का क्या होगा इनफिमम? 0। नाउ वी आर रेडी फॉर द प्रूफ ऑफ दिस वन। देखो, कोई भी प्रूफ प्योर मैथमेटिक्स में, कोई भी अगर आप प्रूफ करने जा रहे हो, तो हमेशा सबसे पहला काम आप किया करो कि जितने डेफिनेशन है बार बार कोशिश किया करो उसे रिकॉल करने की, और थोड़ी सी उसकी ज्योमेट्री, और तभी आपको प्रूफ में इंटरेस्ट डेवलप होगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर प्रूफ थ्योरम पे आओगे तो फिर आपको चीजें भूलने लगेगी। मतलब हो सकता है उस वक्ती तौर पे आप पढ़ो, आपको समझ में आ जाए, लेकिन वो बात नहीं आएगी। ठीक है ना? तो आप हमेशा इसमें, अब देखो, अब आपको मैंने दो डेफिनेशन बताए, एक तो इसमें इनफिमम के टर्म में, हालांकि देखो सब रिलेटेड है। ये भी ये जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट हमने किया, ये भी देखो मैट्रिक से हो रहा है, मैट्रिक के टर्म में डिफाइंड है। और जो ओपन बॉल्स बनाते हैं मैट्रिक में, वो भी किसके टर्म में डिफाइन है? मैट्रिक से। तो मैट्रिक से दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं कि इसको यहाँ लिख दिया और उसको लिख दिया, दोनों अलग अलग हो गए। ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। अब मैं यहाँ पे उसके डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ है कोर्स में, लेकिन आप चाहो तो इसको देख सकते हो। अब प्रूफ पे आते हैं। यहाँ इफ एंड ओनली इफ है, एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर इफ एंड ओनली इफ रो ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो चलो पहला पार्ट लेते हैं। सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, सो इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, अब देखो अगर ये सेट, ये एक्स अगर ए का ही मेंबर हो गया, तो आप ये बात बताओ, अगर सेट ए का मेंबर हो गया तो अब यहां पे देखो, अगर मान लो जैसे कोई सेट है, आपको पहले मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के लिए काम करता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे सबको कोई फाइनाइट सेट ले लेते हैं, इक्वल टू 1 2 3।
just for the sake of explanation, and under usual metric first try to understand the concept, then we will extend it to arbitrary metric. Suppose set A is 1 2 3, just for the sake of explanation, and suppose x is equal to 0, then obviously distance between 0 1, then how we will compute this? The distance between 0 and 1 is 1, right here 1, distance between 0 and 2 is 2, distance between 0 and 3 is 3, and we know that the infimum of this set, infimum is basically among all lower bounds the largest one is called infimum. So all real number less than equal to 1 is going to be its lower bound, and the largest among them is 1. 1 is going to be its infimum. Is it clear to everyone? Yes, sir. है ना, ये सब रियल में बहुत डिस्कशन कराया है मैंने. Now suppose in place of x equal to 0, I have x equal to 2. Now 2 is a member of this set. Now think again. Distance of 2 from 1 is 1. Distance of 2 from 2 will be 0. Why? Because d of x y equal to 0 if and only if x equal to y. And distance between 2 3 is 1. And look at its infimum. Its lower bound is less than equal to 0. All real numbers less than equal to 0. And among them the greatest one is 0. So its infimum is 0. Because once x is a member of this set, then with a particular element, I mean with the same x, d is going to be 0. And hence infimum is going to be 0. Because distance is always a non-negative quantity. So minimum possibility we have for this d is 0. Is it? Yes, sir. नेगेटिव कभी होगा नहीं, क्योंकि d क्या है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इस पे आप गौर किया करो, है ना. इस पे इसको शॉर्ट में से बस रीड करके नहीं निकल जाते, आप थोड़ा सा छोटे छोटे एग्जांपल लेके कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश किया करो, तो आपको इस पे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. अब देखो यहाँ पे क्या करना है. अब इस प्रूफ को दोबारा इस लाइन को रीड करो, देखो बहुत अच्छा लिखा हो इसमें. लेट x बिलोंग्स टू a क्लोजर. नाउ इफ x बिलोंग्स टू a, इफ x बिलोंग्स टू a, देन ऑब्वियसली सी ए क्लोजर क्या है, ए क्लोजर होता है ए यूनियन ए डैश derived set. So x belongs to a closer means either x will be in a or x will be in a dash. So suppose x belongs to a, x belongs to a, then obviously d of x is equal to 0. समझ में आ गया क्यों d of x से 0 होगा? Because when The member is हाँ, if x belongs to, तो infimum लगा है ना, x का a से डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम से 0 हो गया. Assume x is not in a. If x is not in a, then x is a limit point of a. X is a limit point of a. So thus, for any epsilon greater than 0, there exists a y. Such, now see, once x is a limit point of a, so according to limit point of a, every open sphere centered at x, every open sphere centered at x. Thus, for any epsilon greater than 0, there exists a y belonging to this open sphere intersection A, such that d of x y is less than epsilon. देखो इसको ऐसा काम करो, जैसे when x is a limit point of set A, suppose x is a limit point of set A, तो limit point का definition क्या कहता है कि whatever open sphere with center at x, we will take say of radius epsilon greater than 0, its intersection with set A is non-empty. देखो कायदे से यहाँ लिखना क्या चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए कि s epsilon x minus x, its intersection with A is non-empty. लिखना तो ये चाहिए था, डेफिनेशन तो ये ना कि अगर x लिमिट पॉइंट है इसका, x is limit point of A, then s epsilon x, I mean for every open sphere with center at x, its intersection with set A is non-empty other than x. But see, if x is already not in A, if x is already not in A, अगर x यहाँ नहीं है तो intersection में नहीं होगा, तो इसको चाहे लिखो ना लिखो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता. So this intersection is going to be non-empty. So if this intersection is going to be non-empty, so I can assume that suppose y belongs to this intersection, because this intersection is non-empty. So this is why it is written that there exists a y belonging to this intersection, because this intersection is non-empty from the definition of limit point. So if this intersection is non-empty, now you can see that we have x here, and let me construct this ball of radius epsilon around this x, just for the sake of explanation, because we are in arbitrary matrix, so it need not look like this.
and suppose this is the set A and suppose this is the set A. So this one is their intersection. So if we have any y here, then obviously the distance between x and y is going to be less than distance between r. I mean its radius r. And Yes, radius sir. is epsilon here. ठीक है, डाउट तो नहीं है आपको किसी को? So what we have that its distance in all such cases, see in first case when x belongs to A, d of xa is 0, hence infimum. However, better to write here rho of xa, because not with every x, with a particular x it will be 0, and in case of infimum, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ये मैट्रिक की प्रॉपर्टीज हुआ है ना 0 dx से। हाँ, लेकिन सुनो मेरी बात, देखो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है। रो बेहतर होगा रो अगर आप लिख लो। क्यों रो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो x एक ठीक है, लेकिन x के साथ डिस्टेंस 0 होगा ना, x का सेट के a के साथ हर पॉइंट के साथ डिस्टेंस 0 जरूरी नहीं है ना भाई। देखो यहाँ पे x को मैंने 2 लिया, यस सर। 2 का 1 से डिस्टेंस 0 नहीं है, लेकिन 2 का 2 से डिस्टेंस 0 है ना। वो अलग बात है कि जब इन्फीमम लेंगे तो 1 0 1 का इन्फीमम ऑलवेज 0 होगा। So I think better to write here rho not d. हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। अभी भी आप लोगों के टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, मुझे लग रहा है ये डाउट। सर dx से तो 0 मैट्रिक की प्रॉपर्टीज हो जाएगा, जो मैट्रिक अरे की प्रॉपर्टी भाई यहाँ y x a का कोई भी Yes, मेंबर sir. हो सकता है ना सर वो हो लेकिन गया सर रो का कॉन्सेप्ट क्यों ला रहे हैं? अरे यार आप लोग भूल जाते हो। d of x y equal to 0 if and only if x equal to y, ये होता है ना डेफिनेशन। जब Yes, x sir. और y इक्वल है तभी 0 होता है ना। यहाँ Yes, x sir. और सेट a, तो सेट a से कोई भी मेंबर हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा ना कि सेट a का हर मेंबर x के इक्वल हो। यस सर। वो सर इन्फीमम लेने की वजह से 0 हो रहा है। हाँ इन्फीमम के वजह से 0 होगा। जैसे देखो ना ये वाली ये 1 है 0 है 1 है, तो हर एक के साथ 0 कहाँ आ रहा है? पूरे Yes, सेट sir. के साथ डिस्टेंस कहाँ 0 हो रहा है? लेकिन इन्फीमम लेंगे वो 0 होगा। तो यहाँ रो लिख लो आप लोग, रो लिख लो, ठीक है ना। रो ऑफ x इक्वल टू 0। तो देखो उस केस में तो ऑलरेडी 0 हो गया, इन्फीमम 0 आ गया। नाउ इन केस व्हेन x इज नॉट इन a, then x will be limit point, so in that case d of xy is less than epsilon, distance between xy is less than epsilon। और इस डेफिनेशन में है क्या, d of xy क्या लेस देन epsilon है ना, और epsilon का इन्फीमम क्या होता है? 0। अब समझ में आ गया प्रूफ? यस सर। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे भी रो होगा, ये रो है, ठीक है ना। वो यहाँ देखो ठीक लिखा हुआ है, ये मुझे लग रहा है यहाँ, ये असल में हमारे पुरानी वाली एडिशन है ना, इसलिए इसमें नई वाली एडिशन है, नए वाले बुक में शायद करेक्शन है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी रोल कर लें, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है ना कि रो 0 है ना, रो आई मीन रो ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। हेंस फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 रो ऑफ x इक्वल टू 0। क्लियर हुआ प्रूफ? देखो 50 प्रूफ तैयार कर कोई फायदा नहीं है। जो बेसिक प्रूफ है ना, 5-6 जो प्रूफ होते हैं, अगर आप अच्छे से समझ लो तो आपको आगे की सारे प्रूफ खुद समझ में आने लगेंगे। और मैंने रियल लाइन के केस में आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझा रखा है, इन्फीमम सुप्रीमम सेट का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये यहाँ तक पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है ना तो ये नहीं कि सर जो कह रहे हैं वो मान लो, आप इस तरह एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करके खुद से देखो, सोचो 1 बार 2 बार, आपको हमेशा एक बार समझ में आ गया तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा आपको ये डाउट। तो ऐसे 1000 प्रूफ आप रट लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। 7-8 जो अच्छे प्रूफ हैं किसी भी टॉपिक के, उसे अगर आपने समझ लिया तो आपको एक आइडिया बिल्ड हो गया, आप उस बेस पे बाकी सारे प्रूफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सर, ये एक बार ये लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ क्या कह रहे हो सर? ये therefore रो ऑफ x is less than epsilon for any epsilon greater than 0, ये एक्सप्लेन कर दिया एक बार। ये हाँ रो ऑफ x देखो, इक्वल टू ये एक बात बताओ, ये क्या लिखा है कि इफ इन केस y is a limit point of a, then by definition every open sphere is going to intersect with a other than x। यस सर। I mean intersection of every open sphere with a is going to be non-empty। यस सर। non-empty होगा तो मैं उसमें कोई ना कोई y ले सकता हूँ, क्योंकि इंटरसेक्शन Yes, non-empty है। तो अब y किसके अंदर है? x को सेंटर मान के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर है और a में भी है। तो सपोज करो ये सेट आपका a है, यस सर। और ये है x को सेंटर मान के ये एप्सिलॉन रेडियस का हम एक बॉल बना दिया, तो दोनों का इंटरसेक्शन यही तो है।
इसके अंदर कहीं y है। अब ये टोटल रेडियस तो एप्सिलॉन है और y इसके अंदर है, y उस बॉल के अंदर है ना, इंटरसेक्शन में है। यस सर, तो इसका डिस्टेंस ये पूरे एप्सिलॉन से तो कम ही होगा। यस d of xy क्या लेस देन एप्सिलॉन। तो y इसके इंटरसेक्शन में कहीं से भी आ जाए, y इसके इंटरसेक्शन में कहीं से आ जाए इस, ठीक है, दिस दैट इज d of xy लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से क्या आ गया, d of xy इज लेस देन एप्सिलॉन। सर ओपन इंटरवल 0,1 के केस में क्या होगा सर? सेकंड पार्ट इसमें आएगा। कौन से एग्जांपल? सर हाँ बताएं। x अगर लिमिट पॉइंट है तो सर ये वाला एग्जांपल आ जाएगा ना, उसमें ओपन इंटरवल 0,1। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि a को मैं ले लूं ओपन इंटरवल 0,1 और लिमिट पॉइंट इसका ले लिया 1, ये कह रहे हैं? यस सर, ठीक यस है। सर, लिमिट पॉइंट मान लो 1 ले लिया, l इक्वल टू 1 ले लिया, तो 1 तो इसका मेंबर तो है नहीं, तो 1 तो लिमिट Yes, पॉइंट sir. में गया। तो 1 को सेंटर मान के मैं जितने भी बॉल बनाऊंगा, आई मीन 1 माइनस एप्सिलॉन अंडर यूजुअल मेट्रिक बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसलिए ओपन इंटरवल इसका सेट ए के साथ, देखो सेट ए यहाँ पे 0 है और 1 के राइट में है ना, जी सर, 1 पे ओपन है। तो ये जो इंटरसेक्शन आएगा, आप जानते हो ना आर्किमिडीज पर 1 के जैसे लेफ्ट में जाओगे तो ये इंटरसेक्शन ऑलरेडी क्या होगा, ये इंटरसेक्शन ओपन एट 1, ये आपका यही आ गया एस एप्सिलॉन एक्स इंटरसेक्शन ए। यस सर। अब यहाँ पे अगर आप इस इंटरसेक्शन में कोई भी y लेते हो, यहाँ पे इस इंटरसेक्शन में कोई भी y लेते हो, उस y का इस x के साथ सेंटर 1 लिया था ना, यस सर, सेंटर 1 लिया था, Yes, sir. तो 1 को सेंटर मान के इन्होंने बॉल ड्रॉ किया था, तो ये रेडियस जो होगा ये हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा कि नहीं? 1 से Yes, ये टोटल डिस्टेंस एप्सिलॉन है ना 1 से, और y इसके अंदर है, तो डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड y इज गोइंग टू बी लेस देन एप्सिलॉन। यस डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड y, Yes, sir. सेट ए तो यहां से लेके यहां तक है ना, सर। ठीक है। So distance, so see with all other cases, I mean if x is in A, then already we have proved that distance is 0, and if x is not in A, if x is not in A, then in that case again this infimum is coming to be 0. So overall with every member of the set A, देखो इसमें क्या करना था आपको, x का A से निकालना था, तो y belongs to A होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया है। हमें ये दिखाना कि y के हर एलिमेंट के साथ, y के हर एलिमेंट सेट A के हर एलिमेंट के साथ ये इस डिस्टेंस का इन्फीमम ही तो रो होता है, इस डिस्टेंस का इन्फीमम ही तो रो होता है। तो रो ऑफ x से मुझे 0 दिखाना है, तो यहाँ पे अब वो यहाँ पे x a की जगह पे क्या दिखाना है, x, ठीक है, x बिलोंग्स टू ए क्लोजर है ना, इफ एंड ओनली इफ रो ऑफ x इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, d ऑफ xy इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अब d ऑफ xy इज लेस देन एप्सिलॉन, अगर y इनके इसका मेंबर है तो y मतलब s एप्सिलॉन x में भी होगा और y a में भी होगा, ये तो क्लियर है। y will be in this open sphere as well as y is a member of A. Yes sir. In such cases also, distance of xy is less than epsilon. Distance of xy is less than epsilon. Less than. तो अब एप्सिलॉन का इन्फीमम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का इन्फीमम Zero. क्या हो जाएगा, 0। तो इसी वजह से यहाँ से क्या लिखा है, therefore d of x is less than 0 for any epsilon, hence rho of x equal to 0. ठीक है। कन्वर्स पार्ट, now suppose that rho of x equal to 0. Converse part, suppose that rho of x equal to 0, and then we need to show that x belongs to a closure. X belongs to a closure means either x will be member of A or x will be its limit point. ये है derived set का member होने क्या मतलब, limit point। और हम मान के क्या चल रहा है, rho of x equal to 0।